The most noble actions of humankind are quite simple to prescribe but extremely hard to act upon. These are to feed the hungry, clothe the destitute, support the orphan and help the needy. The ascent of man, therefore, lies in the eradication of poverty, which that encompasses all such acts. Yet eradicating poverty is difficult because we do not have the courage and the patience of the likes of Abdul Sattar Eddy and Mother Teresa, who spent their entire life helping the needy and empowering them to live with dignity. Poverty is rising in this current period of stagflation, with inflation over 30%, growth crashing, and unemployment rising fast. People who were not poor a year ago, but close to the poverty line, are becoming poor. These include low-income households. The budgets of middle-income households, too, are being squeezed each day. The level of the misery index, the sum of the rates of inflation and unemployment, has risen from 15.2 to 36.8, the highest ever in Pakistan's history, even if we assume that the current unemployment rate since FY21, 6.3%, has not changed. Pakistan's poverty headcount ratio, defined as the proportion of population living below the national poverty line, was 21.9% in FY19. Although later estimates are not available, the poverty count must have increased during the COVID-19 pandemic. It probably declined in FY21-22 because of good growth and the commendable handling of the pandemic, before rising again in FY23 due to the floods, high inflation and the declining output of large-scale manufacturing. While estimated figures for the poverty headcount are not known, they must be rising due to stagflation. Readers should note that the national poverty line was based on the cost of a fixed basket of basic needs estimated at 3,757.85 rupees per adult per month, according to FY19 rates. This cost changes every year due to inflation, and it would be much higher for FY23. The international poverty line is different from the national poverty line, and was defined as $1 a day in terms of 1985 purchasing power parity prices. At that time, it was close to $370 per person per year, roughly equal to $1 per day. Currently, the international poverty line is set at $2.15 per person per day at 2017 PPP prices. There are other international poverty lines as well: lower middle income poverty, $3.65 in terms of 2017 PPP prices, and upper middle income poverty, $6.85 in 2017. International poverty lines make comparisons between different countries possible. We need policies that can reduce poverty in the short, medium and long term. The poverty headcount ratio in Pakistan under the international poverty line was 4.9% of the population in FY19, according to the World Bank. It increased to 5.6% in FY20 and then declined to 4.7% and 3.9% in FY21 and FY22. Lower middle-income poverty rates during these years, FY19 to FY22, were 39.8%, 42%, 39.1% and 36.4% for the population. Upper middle-income poverty rates stood at 84.5%, 85.5%, 84.1%, and 82.9% for the population. This means that 3.9% of Pakistanis in FY22 were living on less than $2.15 per day, 36.4% on less than $3.65, and 82.9% on less than $6.85 a day at 2017 prices. These poverty lines were equivalent to $1 a day, $2 a day, and $3 a day at 1985 prices. Although reducing or eradicating poverty is far more important than measuring poverty, monitoring the poverty situation is also essential for the attainment of poverty goals. The first of the UN's 17 Sustainable Development Goals is eradicating extreme poverty for all people everywhere, no poverty, by 2030. Pakistan's progress on SDG 1 has been steady, despite a setback in FY20 due to COVID-19. The risk to steadiness lies in the current stagflation.
What policies are needed to revive a steady decline in poverty? We need policies that can reduce poverty in the short and medium term as well as in the long term. Short-term policies are focused on identifying the poor so that cash can be transferred unconditionally to poor households for meeting immediate essential needs, mainly food. Medium and long-term policies include conditional cash transfers that empower poor household members to acquire education and vocational skills to become part of the labor force or supplement their income if they are already employed in low-paying jobs. Prudent macroeconomic management is also part of medium-term policies to keep inflation under check and sustain growth and employment. Both government and private sectors contribute towards alleviating poverty. The Benazir Income Support Program and the ASA's Emergency Cash Program run by the government go a long way in reducing extreme poverty. These are based on unconditional cash transfers to supplement the income of targeted poor households. BISP also implements conditional cash transfers for primary education support for empowering poor households. The Pakistan Poverty Alleviation Fund is also running conditional cash transfer programs, with a presence in 147 districts countrywide. PPAF seeks to reduce dependence on social protection, helping families incrementally move from consumption support to asset transfers, to interest-free loans, and to microfinance. Private philanthropy in Pakistan also contributes to poverty alleviation significantly. According to the Pakistan Giving Report 2021 prepared by the Pakistan Center for Philanthropy, 8 out of 10 Pakistanis helped the poor or gave charity during the year. An adult on average spent 10,000 rupees a year on charitable giving. Despite sizable charity activities, Pakistan is close to the bottom of world philanthropy with a ranking of 107 out of 119 countries covered in the World Giving Index 2022 prepared by the Charity Aid Foundation UK. According to this index, Indonesia is the most philanthropic country in the world. Researchers on philanthropy should explore why Pakistan is lagging behind other countries in philanthropic endeavors. Eradication of poverty requires an appropriate mix, including periodic cash transfers to poor households, to address short-term needs and support for enhancing the capabilities of poor households so that they can come out of poverty in the medium to long term. The writer is a former deputy governor of the State Bank of Pakistan. Published in Dawn, April 1, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. बनी नौ इंसान के सबसे अजीम अमाल तजवीज़ करने में बहुत आसान हैं, लेकिन उन पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है। ये भूखों को खाना खिलाना, मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना, यतीमों की कफालत करना और मिस्कीनों की मदद करना है। लिहाजा इंसान की तरक्की गुर्बत के खात्मे में मुज़मर है, जिसमें इस तरह के तमाम अमाल शामिल हैं। इसके बावजूद गुर्बत का खात्मा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास अब्दुल सत्तार ईधी और मदर टेरेसा जैसे लोगों की हिम्मत और सब्र नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज़रूरतमंदों की मदद करने और उन्हें वकार के साथ जिंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार बनाने में गुजार दी। मौजूदा दौर में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, इफरात ज़र की शरह 30% से ज़्यादा है, शरह नमू गिर रही है और बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो लोग जो 1 साल पहले गरीब नहीं थे लेकिन गुर्बत की लकीर के करीब थे, अब गरीब होते जा रहे हैं। इनमें कम आमदनी वाले घराने भी शामिल हैं। मुतवस्सित आमदनी वाले घरानों का बजट भी हर रोज कम किया जा रहा है। बदहाली इंडेक्स, इफरात ज़र और बेरोजगारी की शरह का मजमुआ की सतह 15.2 से बढ़कर 36.8 हो गई है, जो पाकिस्तान की तारीख में अब तक की बुलंद तरीन सतह है। भले ही हम ये मान लें कि माली साल 21 के बाद से मौजूदा बेरोजगारी की शरह 6.3% में कोई तब्दीली नहीं आई है। माली साल 2019 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो कौमी सतह पर गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाली आबादी के तनासुब के तौर पर बयान की गई है। अगरचे बाद में तखमीने दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान गुर्बत की तादाद में इजाफा हुआ होगा। माली साल 21-22 में इसमें शायद अच्छी नमू और वबाई अमराज से निमटने की काबिल सिताइश वजह से कमी वाक़ई हुई,
लेकिन माली साल 23 में सैलाब, आला अफरात ज़र और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की गिरती हुई पैदावार की वजह से दोबारा इजाफा हुआ। अगरचे गुर्बत के आदाद व शुमार के तखमीने के आदाद व शुमार मालूम नहीं है, लेकिन उनमें स्टैगफ्लेशन की वजह से इजाफा हो रहा है। क़ारीन को याद रखना चाहिए कि कौमी गुर्बत की लकीर बुनियादी ज़रूरियात की एक मुकर्रर टुकड़ी की लागत पर मबनी है, जिसका तखमीना माली साल 19 की शरह के मुताबिक फ़ी बालिग माहाना 3757.85 रुपये लगाया गया है। इफ़रात ज़र की वजह से ये लागत हर साल तब्दील होती है और माली साल 23 के लिए ये बहुत ज़्यादा होगी। बैन अल-अक़वामी गुर्बत की लकीर कौमी गुर्बत की लकीर से मुख्तलिफ है और इसे 1985 में क़ुव्वत ख़रीद की बराबरी की कीमतों के लिहाज से डॉलर फ़ी दिन के तौर पर बयान किया गया था। इस वक्त ये फ़ी शख्स सालाना $370 के करीब था, जो तकरीबन $1 फ़ी दिन के बराबर था। इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पर गुर्बत की लकीर $2.15 फ़ी शख्स यौमिया मुकर्रर की गई है। दीगर बैन अल-अक़वामी गुर्बत की लकीरें भी हैं। कम दरमियानी आमदनी की गुर्बत 2017 की पी कीमतों के लिहाज से $3.65 और अपर मिडिल इनकम गुर्बत 2017 में $6.85। गुर्बत की बैन अल-अक़वामी लकीरें मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुवाजना मुमकिन बनाती हैं। हमें ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है जो कलील, दरमियानी और तवील मुद्दत में गुर्बत को कम कर सकें। आलमी बैंक के मुताबिक माली साल 2019 में गुर्बत की आलमी लकीर से नीचे पाकिस्तान में गुर्बत की शरह आबादी का 4.9% थी। माली साल 2020 में ये बढ़कर 5.6% और फिर माली साल 21 और माली साल 22 में 4.7% और 3.9% रह गया। इन सालों माली साल 19 से माली साल 22 के दौरान दरमियानी आमदनी वाली गुर्बत की कम शरह आबादी के लिए 39.8%, 42%, 39.1% और 36.4% थी। अपर मिडिल इनकम गुर्बत की शरह 84.5%, 85.5%, 84.1% और 82.9% रही। इसका मतलब है कि माली साल 22 में 3.9% पाकिस्तानी $2.15 यौमिया से कम पर, 36.4% $3.65 से कम पर और 82.9% 2017 की कीमतों पर $6.85 यौमिया से कम पर गुजारा कर रहे थे। गुर्बत की ये लकीरें 1985 की कीमतों पर $1 यौमिया, $2 यौमिया और $3 यौमिया के मसावी थी। अगरचे गुर्बत को कम करना ख़त्म करना गुर्बत की पैमाइश से कहीं ज़्यादा अहम है, लेकिन गुर्बत के अहदाफ के हुसूल के लिए गुर्बत की सूरत हाल की निगरानी भी ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 पायदार तरक्याती अहदाफ में से पहला 2030 तक हर जगह तमाम लोगों के लिए इंतहाई गुर्बत का खात्मा है। कोविड-19 की वजह से माली साल 2020 में धचके के बावजूद SDG 1 पर पाकिस्तान की पेशरफ्त मुस्तहकम रही है। मुस्तकिल मिजाजी का खतरा मौजूदा स्टैगफ्लेशन में है। गुर्बत में मुसलसल कमी को बहाल करने के लिए कौन सी पॉलिसियों की ज़रूरत है? हमें ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है जो कलील और दरमियानी मुद्दत के साथ साथ तवील मुद्दत में भी गुर्बत को कम कर सकें। कलील मुद्दती पॉलिसियाँ गरीबों की शनाख्त पर मरकूज़ हैं ताकि फौरी ज़रूरियात, बुनियादी तौर पर खुराक को पूरा करने के लिए गरीब घरानों को गैर मशरूत तौर पर नकद रकम मुंतकिल की जा सके। दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियों में मशरूत नकद रकम की मुंतकिली शामिल है, जो गरीब घरेलू मेंबरों को तालीम और पेशा वराना महारत हासिल करने का इख्तियार देती है ताकि वो लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकें, अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें अगर वो पहले ही कम तनख्वाह वाली मुलाजमतों में मुलाजमत कर रहे हैं। दानिशमंदाना मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी इफ़रात ज़र को काबू में रखने और तरक्की और रोज़गार को बरकरार रखने के लिए वस्त मुद्दती पॉलिसियों का हिस्सा है। सरकारी और निजी दोनों शोबे गुर्बत के खात्मे में अपना किरदार अदा करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम इंतहाई गुर्बत को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये गैर मशरूत नकद मुंतकिली पर मबनी हैं ताकि हदफ शदा गरीब घरानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। BISP गरीब घरानों को बाइख्तियार बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन सपोर्ट के लिए मशरूत नकद मुंतकिली भी नाफिज करती है।
पाकिस्तान पावर्टी एलिफालुएशन फंड मुल्क भर के 147 अजला में मौजूदगी के साथ मशरूत नकद मुंतकली प्रोग्राम भी चला रहा है। PPAF समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार को कम करना चाहता है, जिससे खानदानों को खपत की मदद से असासों की मुंतकली, बिला सूद कर्जों और माइक्रो फिनांस की तरफ मुंतकिल करने में मदद मिलती है। पाकिस्तान में निजी फलाही काम भी गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी की तैयार करदा पाकिस्तान गिविंग रिपोर्ट 2021 के मुताबिक साल के दौरान 10 में से 8 पाकिस्तानियों ने गरीबों की मदद की या खैरात की। एक बालिग शख्स खैराती अतियात पर सालाना औसतन 10,000 रुपये खर्च करता है। चैरिटी एड फाउंडेशन बरतानिया की जानिब से तैयार करदा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में शामिल 119 ममालिक में से 107 की रैंकिंग के साथ पाकिस्तान दुनिया भर में फलाही कामों में सबसे नीचे है। इस इंडेक्स के मुताबिक इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा रिफाही मुल्क है। इंसान दोस्ती के मुहक्किकीन को ये मालूम करना चाहिए कि पाकिस्तान फलाही कामों में दूसरे ममालिक से पीछे क्यों है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुनासिब मुरक्कब की ज़रूरत है, जिसमें गरीब घरानों को वक्तन फ़वक्तन नक़द रकम की मुंतकली भी शामिल है, ताकि गरीब घरानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए कलील मुद्दती ज़रूरियात और मदद फराहम की जा सके, ताकि वो दरमियानी से तवील मुद्दत में गुर्बत से बाहर आ सकें। मज़मून निगार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ डिप्टी गवर्नर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 1 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.